What if I told you you can actually earn money and pay your bills doing the things you already love? Yes, you heard that right. You can earn money by reading, watching movies, drawing, sketching, painting, gardening, capturing things you love, and even just talking about the things you enjoy because I'm literally doing that right now. Hello, everyone, I'm Smriti, your favorite book girl on the internet, and I think most of you already know this. I'm a full time content creator and a part time student, and this is what my life looks like. And trust me, ये सब मैंने खुद ही किया है. I wish it was my father's money or my mother's money, but it is not. Most of you wonder what I actually do to support my life, and trust me, this is the only thing I do. Yes, I'm talking about reading books and then talking about it. I didn't start with some big plan. मुझे सिर्फ books पढ़ना पसंद था, books के बारे में बातें करना पसंद था. But the only thing I did differently was that I didn't let my hobby just be a hobby. I do share some snippets of my life here and there all the time on my Instagram account. So if you're not following my Instagram account, please make sure to do it because trust me, you're missing on a lot. So yeah, whenever I post anything about my life, this is the question that I get asked the most. Smriti, how are you earning from this? How are you living this life? What do you do? And today I am going to answer all your questions. So this is part 1 where I'll tell you guys how you can actually start, and in part 2 we'll talk about how to actually turn all this into real income. Trust me, for the longest time I thought कि hobbies are just hobby. Like मुझे reading करना पसंद है तो बस पसंद है, reading करके होगा क्या. But ये मेरा मिथ तब टूटा when I landed my first big deal. उसके बाद मुझे समझ आया your hobby is not what earns you money, the skill inside your hobby does. So ask yourself what skills exist inside the thing I enjoy doing because that's what people eventually pay for. For example, if you're someone like me जिसको reading करना बहुत ज़्यादा पसंद है, it's not reading that earns money, it's storytelling, reviewing, analyzing and communicating ideas. जब मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था, when I started my bookstagram journey, मेरा एंड गोल मनी अर्न करना नहीं था. इट वॉज टू मेक कनेक्शंस. मुझे बस ये प्लेटफॉर्म पे इसलिए आना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल. मुझे ये भी नहीं पता था कि सोशल मीडिया से वी कैन अर्न मनी, और इतना ज्यादा मनी ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था. व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट बुक रिव्यू, they paid me only 100 rupees for a book review, but at that time मुझे वो भी बहुत बड़ी बात लगी थी, and I was like, oh my god, this is huge, like I'm getting paid to read. So it all started with 100 rupees, और आज एक ऐसा time है I even get paid in lakhs for a single review post. तो या इट इज ऑल पॉसिबल, बट उसके लिए आपको एक चीज मास्टर करनी पड़ेगी, और वो है आपकी स्किल्स. वंस यू सी योर हॉबी लाइक दिस, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग चेंजेस, एंड दिस इज वेयर मोस्ट पीपल स्टॉप. दे एंजॉय समथिंग बट दे नेवर ट्राई टू गेट बेटर एट इट. आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है वो करना, बट इफ यू आर रियली इनटू समथिंग, लाइक आई एंजॉय रीडिंग बट आई ऑल्सो एंजॉय अदर थिंग्स, और मैं उनके बारे में पोस्ट करती हूँ बट इतना ज्यादा नहीं, बिकॉज दिस इज माई प्राइमरी फोकस. मेरी लाइफ में 60 to 70% तो बुक्स ही होंगी. ओके, सो व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई कैन एक्चुअली गेट पेड टू रीड बुक्स, आई वाज लाइक व्हाई नॉट आई टर्न इट इनटू समथिंग आई कैन डू फॉर अ लिविंग. लेटर आई रियलाइज्ड कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं होगा जो मैं करना चाहती हूँ. आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई स्किल्स. लाइक इट्स गुड कि आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, या फिर आई एंजॉय पेंटिंग, आई एंजॉय डूडलिंग, आई एंजॉय sharing my life with you all, but it is not enough. If you want to make this your career, like if you want to make your hobby your career, you need to learn things like how to present your ideas, how to communicate clearly, how to tell stories, and most importantly, how to actually hold attention. Because in today's time where people are कॉन्टिन्यूसली स्क्रोलिंग और उनका टेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम हो गया है, ये सबसे ज़्यादा टफ चीज़ होती है. यू नीड टू लर्न कि आप लोगों की अटेंशन ग्रैब कैसे करोगे, हाउ यू कैन एक्चुअली मेक देम pause and watch your videos, your ideas, how you can actually make them read your writings or anything. Now I know you guys will be like, Smriti, but we don't have time, we have our studies to do, we have our 9 to 5 jobs, and trust me, I get it. I'm not telling you guys to leave your studies behind, or I'm not telling you to leave your jobs just for the sake of creating content. I am only telling you guys to invest at least 1 to 2 hours daily in your hobbies and turn them into something more. Okay Smriti, we can take out some time to develop our skills, पर करे कहाँ से, हमें वीडियोस कहाँ से मिलेगी, ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, एंड दिस इज वेयर आई कैन रियली हेल्प यू गाइज. आई हैव फाउंड एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज वेयर यू कैन एक्चुअली लर्न रियल प्रैक्टिकल स्किल्स फ्रॉम पीपल हु आर already working in those fields, and it's called Skillshare. So whether you're trying to learn content creation, video editing, storytelling, graphic designing, filming, or even how to build a
personal brand, there are classes for everything. I'm not here to sell you some random course or something gimmicky, okay? We are talking about actually building real skills here. Because trust me, I have been using Skillshare myself, Exploring classes around storytelling and creative writing, especially something like the art of storytelling. What I personally like is that the classes are short, structured, and project based. So you're not just passively watching, you're actually learning and applying things. So yeah, if you're curious, The first 500 people to use my link in the description box or scan the QR code will receive a 1 month free trial of Skillshare. now a lot of you would be like, Smriti, it's just a hobby और मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ अपनी इस hobby में. But trust me, it's not you. Sometimes all you need is the right direction and structure. And who knows, maybe ये hobby आपका career बन जाए. And I'm not telling you guys to just start content creation. आपको अपनी hobby सिर्फ content creation के लिए develop नहीं करनी है. There are so many other things. You can also refine your skills for your career. For example, if you want to go into marketing, आप अभी से उस पर work करना शुरू कर सकते हो. If you want to become a businessman, आप अभी से personal branding पर काम कर सकते हो. Maybe you can even turn your hobby into something more for the future. Now, once you start building a skill, the next step is sharing your work. You don't need to be perfect to share your work with the world. ये सबसे बड़ा myth है कि you need to be perfect. I know social media में आजकल आपको दिख रहा होगा कि everybody is perfect, सब इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं और सब हर चीज़ में अच्छे हैं. But trust me, social media is not real. मैं बहुत बार बोलती हूँ ये बात. People don't show their behind the scenes. They only show their main highlights. पर आपको ऐसा नहीं करना है. It's okay to be imperfect. आपको उसी imperfection को enjoy करना है और वो ही share करना है real world के साथ through social media. अपनी imperfect journey share करते करते आप कब perfect बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा. For example, when I started my content creation journey, मेरे पास tripod भी नहीं था. मैं literally एक rubber band से वीडियो को अपने फ़ोन को बैलेंस करके वीडियो बनाया करती थी. मेरे पे अपना रूम नहीं था, मेरे पे एक एस्थेटिक बुक शेल्फ नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पे एक आईफोन भी नहीं था. आई स्टार्टेड माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी विद एन एंड्रॉइड. और अगर मैं ये सोचती रह जाती ना कि जब आईफोन आएगा तब करूँगी, जब मेरे पे माइक होगा तब करूँगी, तो शायद मैं कभी स्टार्ट कर ही ना पाती. इफ़ यू एन्जॉय रीडिंग बुक्स, शेयर योर रिव्यूज़. इफ़ यू एन्जॉय राइटिंग, शेयर योर थॉट्स. इफ़ यू एन्जॉय photography, if you like to click pictures, just share your pictures with the world. If you enjoy video editing, just post your edits. And most importantly, at this stage, don't think about money. अभी आपको money के बारे में नहीं सोचना है. Think about building confidence, building proof and building your voice. अभी आप सिर्फ अपने connections बनाने के लिए कर रहे हो. अभी आप अपनी skills share करने के लिए कर रहे हो. Think of it just as an empty CV. अभी आप सिर्फ fill कर रहे हो उसको. जब हम शुरू में CV लेके चलते हैं वो empty रहता है ना, तो अभी आप इसे बस fill कर रहे हो. And then slowly monetization starts happening. Trust me, it's not going to happen overnight. I am being honest with you guys here. एकदम से नहीं होगा. Like internet is a very unpredictable space, okay? We don't know यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा. For some people it can happen overnight, but किसी किसी के लिए ऐसा नहीं होगा. For some it might take 2 years, for some it might take 4 years. It is very unpredictable, but life में क्या unpredictable नहीं है, right? Think of it like this. Even if only 10 people are watching your videos, 10 is still a better number than 0, right? But एक बार अगर monetization start हो गई, you can freelance, you can work with brands, you can sell your own products. Most people don't earn from one thing. They build multiple streams over time. It takes time, it takes consistency. शुरू के 2 साल तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ. Like I was earning, but मैं इतना earn नहीं कर रही थी. Just like I told you guys, धीरे धीरे ही हुआ है. But it is possible. It is not impossible. It is possible. Trust me, I am a living proof of it. In this video, I told you guys how you can actually start. और start करना ही सबसे toughest part होता है. मुझसे अच्छे इस बात को कौन जाने. Every time I sit to film a video, सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए सोचना होता है, बैठना होता है, start करना. और उसके बाद तो अपने आप हो ही जाता है. एक बार आप start कर दोगे, उसके बाद ये चीज़ आपको इतनी tough नहीं लगेगी. So that's it for this part. In the next part, I'll share with you guys how exactly I monetize my content. Remember this, the internet has made it possible for hobbies to turn into real careers. The only difference is some people take it seriously and some don't. And that one thing you do for fun at 2 a.m. might be something that can actually pay your bills. So yeah, that's it for today. Do let me know in the comment section what's your hobby and what skills are you actually looking forward to build. And I'll see you guys next time. Bye.